so that is basically the process. That is basically the concept for the sports performance, exercise, sports medicine. Because the ultimate aim of the sports medicine is increasing human performance, by remaining within the physiological limit. I mean, no doping, nothing, no performance enhancement, nothing. Just you have to be normal, and being in that normal, you want to excel. That is supra physiological. So that's why exercise is medicine, and sports medicine, they are all linked together, and the basic concept is always physiology. That's why we want to highlight the importance of the physiology here, especially with the rise of the non-communicable disease in the society. So this is the background why I want to start this session. And because many people, because I don't know many of the participants also, so I welcome each and everyone to raise any kind of question, or and to raise any kind of doubt or something like that, so that we can discuss further. So before going on, I will start one principle, because everything, if you as a physiologist, what can you do by knowing this principle? You can, I mean, research is good. Research should be there, but research should be linked with implementation. That is, we have to do translational research, implementing research, and we have to benefit clinical side as society also. So research should be linked from lab to the clinic, or from the lab to the field, should be the concept. And what MD physiology is, the good thing about MD physiology, there is a combination of the physiology, because many of the physiology are from the non-clinical side also. But MD physiology has added advantage. They have done MBBS. They know all the clinical practice, so they can link between a primary clinician and the non-clinical researcher. They can become the link between them. And by knowing all these things, so they will be able to, they may be the forerunner for implementation of all the theoretical basis into practical opportunity. Because sometimes the clinician are totally detached from the core research, what is happening. And sometimes core researchers are totally detached from what is happening to the patient and what is happening on the field. So the one who knows both, being a physiologist is a research branch, so research background is there. Being a MD physiologist, you are a MBBS, so you have a clinical background. So by knowing all these things, you can easily be a bridge between these two, to this concept. So this is the basically the concept. So research is important. Research, because many times what is happening is, because I hear that many of the private medical college or state medical college doesn't give any kind of fund to the Department of Physiology or all this. They cannot do much. But the important thing, you don't need much to start your clinical practice also. Because what is important is, physiology can start as a clinical physiologist. They can understand all the pathophysiology of what is happening, and they can contribute positively to the clinic, to the hospital side, or to the patient handling. Another is, you can give exercise therapy, kinesiotherapy. It is also known as kinesiotherapy. So exercise therapy, kinesiotherapy is a basically is a domain where physiologists, or you can apply the physiological principle, and you can do exercise therapy and you can open a clinic also, or incorporate the yoga therapy also, or integrated clinic also. And being a being a faculty there in your college, you can start your wing of exercise therapy. So before going to exercise therapy is also known as kinesiotherapy. You need to know some basic idea of exercise therapy. So I'm starting the exercise Dr. therapy. Varun, Yeah. uh, I must request you that because a lot of senior guys are here, so I wanted to request everyone that you can turn on your videos so that we can see you, and also just join the discussion, because this is not a one-way lecture. This should not be a monotonous lecture, right? So Mhm. if you wanna add something in sports medicine or whatever Dr. Varun is saying, please go on and add. Okay, and if you have any query, then ask. Okay, like what is sports medicine, what is exercise medicine. So if you wanna ask, please go ahead and ask, and you can turn on your videos.
So can I start? Yeah, if nobody has any query, then you can go ahead. No problem. Okay. So basically, so what we are doing is, so let's start with exercise. So before doing exercise, I just want to bring you to some of the theoretical basis of exercise. The first one is, definition of the physical activity. We physical activity in a simple way. We can talk in Hindi also, no problem, because this is an interactive session. So there is no issue of language. I think everyone is from India only, so we can talk in Hindi or English also, no problem. So let me tell you about the physical activity. क्या होता है जैसे कि what is physical activity? Physical activity का मतलब होता है कि anything which you do by your skeletal muscle which raise your energy requirement above your resting level. That's all. जो आपका रेस्टिंग लेवल है उससे थोड़ा सा बढ़ के जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को करा दे बिकॉज ऑफ योर स्केलेटल मसल दैट इज नोन एज फिजिकल एक्टिविटी दैट्स ऑल एज सिंपल एज इट इज नथिंग नो फैंसी वर्ड नो नथिंग तो फिजिकल एक्टिविटी then there is some difference between physical activity and exercise. Why this is so? Because exercise has a purpose. Physical activity may not have any kind of purpose. You may be laying down and you may be you may be in lifting your hand or something without any purpose. But exercise has a purpose. So what is the purpose of exercise? Exercise has only one purpose. That purpose is fitness. So fitness is the most important purpose. Definition of exercise itself contains fitness. So what is exercise? Exercise is a repetitive, structured physical activity with a primary aim to increase your fitness. That's all. That is the important point for this thing, exercise. So, exercise. Let me. Okay. So, so this is exercise. So exercise means if it should be structured, it should have some goal and purpose, and that purpose is usually the increase of the physical fitness. Then another come, what is fitness? ये फिटनेस क्या होता है? तो अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में इन सिंपल टर्म इफ वी फिटनेस क्या होता है? मे बी definition of fitness may different from one person to another person depending upon the requirement. But the most important concept of fitness is you should be able to do your daily life activity. आप जो normal daily life activity with your vigor के साथ, alertness के साथ, with sufficient energy, if you are able to do your daily life activities of the daily life, that is also part of the fitness. And you should have some reserve, physiological reserve should be there so that you may be able to play some sports in your leisure activity or some leisure time fun game. You should be able to do it. That is also fitness. Another one is if you have any kind of the emergency situation, you should also have that enough physiological reserve so that you may be able to handle all that stuff. So basic fitness may number one daily life activity, number two leisure time sports or activities should be there, and number three emergency. Emergency may be in the form of disease, emergency in the form of any kind of thing. I mean, if you have a good reserve, then you can combat the emergency situation very efficiently, very effectively. That's why fitness is important. And under fitness can again be divided into two types depending upon the requirement, because as I told you, the requirement of fitness may be different. हर इंसान पे फिटनेस डिफरेंट होता है. जैसे मेरा रिक्वायरमेंट फिटनेस अलग है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, एथलीट, उसका अलग रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको एक्सरसाइज ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो फिटनेस भी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिफिनेशन ऑफ द फिटनेस आल्सो चेंजेस. तो फिटनेस जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. हेल्थ रिलेटेड फिटनेस माने द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट है. दूसरा है इट मे बी लिटिल बिट हायर, लाइक इसको बोलते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस, स्किल से जो रिलेटेड है. सो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में जैसे कि आ गया कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस. कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बोले तो आपका योर कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी, कार्डियक cardiovascular system, respiratory system should be able to supply sufficient amount of oxygen to your working exercising muscles so that you may be able to
sustain the activity for a longer time. That's all. यानी आप कोई भी एक्टिविटी रिक्वायरिंग योर लार्जर स्केलेटल मसल, कोई भी एक्टिविटी लंबे समय के लिए कर पाने का क्षमता, ये डिपेंड अपॉन योर कार्डियोरेस्पिरेटरी एज वेल एज योर कार्डियक एज वेल एज योर रेस्पिरेटरी। ये हो गया आपका कार्डियो। इंड्योरेंस भी कहते हैं, साइंटिफिक नाम इंड्योरेंस कहते हैं, एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। और इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड को इसको VO2 मैक्स भी कहते हैं, इसको मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन कहते हैं। मगर VO2 मैक्स जो है नॉट विजिबल टू मेजर एवरीवेयर बिकॉज इट इज गैस एनालाइजर आल्सो। सो उसके अलावा भी बहुत सारा चीज भी हो सकता है। सब मैक्सिमल एक्सरसाइज टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो कोविड के टाइम पे बहुत फेमस है, ये सब हो सकता है। ये सब एवरीथिंग कम्स अंडर कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ताकि एक ब्रीफ आइडिया देना जरूरी है, बैकग्राउंड। ये हो गया कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस। कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के बाद आपका आता है मस्कुलर फिटनेस। मसल भी तो चीज है। मस्कुलर फिटनेस में आता है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ माने योर एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम फोर्स, कितना ताकत आप दे सकते हो मैक्सिमम, दैट इज योर मैक्सिमम फोर्स, इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरा मस्कुलर इंड्योरेंस भी होता है। देखिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, अनदर इज मस्कुलर इंड्योरेंस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट। So, मस्कुलर, sir, Varun, हाँ, so muscle endurance for whole body, or you are talking about a single muscle? yeah, it depends. That's why it is known as muscular endurance. Suppose if I talk with a particular muscle like quadricep, then I will talk about quadricep endurance. So muscular endurance is specific to a particular exercise or particular muscle. So suppose I want to improve the endurance of my thigh muscle, then I will do exercise for thigh muscle. So endurance, muscular endurance is specific. It's specific to the muscle, specific to the type of the activity or type of the exercise we are performing. So what is endurance? Muscular endurance. Muscular endurance means ability of your muscle to do sustained contraction. यानी लंबे समय के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में भी ऑफ टू टाइप। You may be doing sustained contraction as a maximum sustained contraction means your ability to hold the maximum contraction for a longer time. Maximum वो हो गया आपका maximum endurance। अगर सब मैक्सिमल से थोड़ा नीचे हम अगर करेंगे तो वो हो गया आपका सब मैक्सिमल इंड्योरेंस। सब मैक्सिमल इंड्योरेंस मींस योर एबिलिटी टू द सस्टेन एक्सरसाइज or sustain contraction of the muscle when your intensity is less than maximum, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका सब मैक्सिमल इंड्योरेंस हो गया। अनदर पॉइंट इज, देखो, मस्कुलर फिटनेस हो गया, इंड्योरेंस हो गया, और दूसरा फोर्स। फोर्स माने स्ट्रेंथ, जो फोर्स आ गया। इंड्योरेंस माने कितना आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं, वो इंड्योरेंस आ गया। और दूसरा है कितना तेजी से आप कर सकते हैं, स्पीड। एक स्पीड का कंपोनेंट भी तो जरूरी है। तो स्पीड का कंपोनेंट जो है, दोनों मिला के, स्पीड और फोर्स दोनों मिला के पावर आ जाता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर पावर। तो मस्कुलर पावर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मस्कुलर फिटनेस। The power is nothing but rate of doing your work done divided by time is the power, or force into velocity. So power has two components. You should be able to, आप बहुत ज्यादा वेट वजन उठाइए, बहुत तेजी से उठाइए। टू कंपोनेंट, स्पीड इनटू फोर्स, इट्स पावर, ठीक है। तो ये पावर कंपोनेंट ये हो गया मस्कुलर फिटनेस के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। दूसरा हमने बोला मस्कुलर फिटनेस। तीसरा हम बोलेंगे बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन माने Varun, मेरे, हाँ जी बताइए। you mentioned about cardiorespiratory fitness. So in that case, just one observation. Generally, Absolutely. whenever we go to a cardiologist, or anybody goes to a cardiologist, or various stress tests are done, right? Yeah. So Yeah. they are using the same type of protocols for a person who is maybe 15 years old, 25 years old, 50 years old, or 80 years old. So in your opinion, is it really the correct way of going about it? Because as we know that as you age, your cardiorespiratory fitness and your requirements are going to change. So in Absolutely. that context, what would you like to comment? Yeah, absolutely. See,
The first one, there are various protocols. Like suppose if you use the treadmill, you have Bruce protocol, modified Bruce protocol, and lots of protocols are there. If you are using cycle ergometer, lots of protocols are also there. Yeah. So protocol selection is very important, but how you are going to select your protocol? Protocol selection depends upon your quality, your status of your patient. Suppose the patient का fitness basal level कितना है. सपोज मेरे पास एक मरीज आया, उसका ऑलरेडी प्रॉब्लम है, फिटनेस इज ऑलरेडी देयर, देन आई विल गो विद सच अ प्रोटोकॉल दैट द स्टार्टिंग प्रोटोकॉल जो है, स्टार्टिंग वन वर्क शुड बी वेरी वेरी लेस, लाइक 2 to 3 MET. और because if you are following, see the purpose is, अब एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट क्यों करते हैं, व्हाई वी डू एक्सरसाइज, इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा. एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करने का 3-4 हमारे एम है. फर्स्ट वन, Dr. Varun, I think many of them don't know what is MET MET. Can you please describe little? Yes, yeah. एब्सोल्युटली. देखिए, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक स्लाइड दिखा दूं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, है ना. उसमें MET वगैरह एक्सरसाइज का ग्रेडिंग एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे करना होता है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि हमको MBBS बच्चों को सिखाना है, बहुत कुछ करना है, एक्सरसाइज की ग्रेडिंग पूछते हैं. और कई बार क्या होता है कि हमारी किताब में जो ग्रेडिंग है जरूरी नहीं कि वो सही हो, उसका रेफरेंस हमको पता नहीं है. सो ग्रेडिंग ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्रेडिंग मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोल सकता हूँ, मगर वही है कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट आया. जस्ट वन स्लाइड, ओके. तो है कि नहीं, मैं एक बार देख ली, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड करके नहीं आया कि मैं बोलूंगा करके आया हूँ. तो चलो लेट मी सी. आप बताइएगा अगर दिख रहा है तो. दिख रहा है क्या ये जो स्लाइड है मैं जो दिखा रहा हूँ? आर यू एबल टू सी माय स्लाइड? Yes, very much. हाँ. इसमें एक्चुअली ये मेरा पुराना स्लाइड है, तो मैं go to the previous one. Okay. So let me do it. Yeah. See, ये दिस इज बेसिकली जो है डिफरेंट है, ये डिफरेंट उसका है, मगर आप इसको थोड़ा सा अभी देख सकते हैं. तो इसमें देखिए, ये जो है यहाँ पे जूम करके, मैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, प्लीज सी दिस वन. इस पॉइंटर को थोड़ा देखिए, इसको पॉइंटर को थोड़ा देखिए. ये मैंने लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है एक्चुअली. तो देखिए, एक्सरसाइज का ग्रेडिंग जो है, लाइट, वेरी लाइट, मॉडरेट, वाइगरस और नियर मैक्सिमम, ये एक्सरसाइज की ग्रेडिंग है. ओके. सो एक्सरसाइज का जो ग्रेडिंग है वो 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से एक्सरसाइज ग्रेडिंग कर सकते हैं इफ यू आर हैव एरोबिक एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो. क्लियर? तो सबसे पहले जो सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं वो है परसेंटेज ऑफ HR मैक्स, हार्ट रेट मैक्सिमम. एंड सिंस हार्ट रेट मैक्सिमम डिपेंड अपॉन उम्र में डिपेंड करते हैं कि 220 minus S, दिस इज द the formula which we use. Problem is 220 minus S is not an accurate formula. Accurate नहीं है. लोग यूज करते, क्यों यूज करते? Because it is very easy. If you go to the original paper where 220 minus S is used, that is not based on regression equation से भी नहीं निकाला, उसने बस assumption, ऑथर ने अपने assumption से निकाल दिया, यानी कोई reliable नहीं है 220 minus S. तो और क्या reliable formula है? बहुत सारा formula है. This is one of the reliable formula where 208 minus 0.7 into age in year. इसके अलावा भी बहुत सारा और फॉर्मूला है. ठीक है. सो हम चलो ये ले लेते हैं. वी विल टेक दिस वन वेयर हार्ट रेट मैक्सिमम इज 207 into एज इन ईयर, है ना. ये इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, मगर फिर भी दिस इज आल्सो नॉट रिलायबल, उतना रिलायबल नहीं होता. अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम हार्ट रेट. वो तो हम कर नहीं सकते. तो नॉन एक्सरसाइजिंग वे में करने के लिए ये हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं. उसका 57%, 57 लेस देन, देखिए याद करने का तरीका है 57, 64, 76, 96, 96. दैट्स ऑल. 57, 64, 76, 96, 96 इतना याद कर लेंगे तो काफी है. कैसे? लेस देन 57 इज वेरी लाइट एक्सरसाइज, मोर देन 57 बट लेस देन 64 इज लाइट एक्सरसाइज, मोर देन 64 बट लेस देन 76 मॉडरेट एक्सरसाइज. ठीक है. तो ऐसे कर करके आप एक्सरसाइज पे ग्रेडिंग कर सकते हैं. दिस ग्रेडिंग इज अप्रूव्ड एंड इट इज वर्ल्ड वाइड यूज, एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. तो इसका रेफरेंस है. तो अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हम इसी को ही फॉलो करते हैं, इसी से ही हम देते हैं. ठीक है.
और दूसरा तरीका है HRR या VOR, इसको कहते हैं। HRR का मतलब होता है हार्ट रेट रिजर्व, जैसे कि ब्रीदिंग रिजर्व होता है ना। तो हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है? हार्ट रेट रिजर्व इज नथिंग बट मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस योर रेस्टिंग हार्ट। तो हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है? HRR इज मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट। रेस्टिंग हार्ट रेट कैसे नापोगे? रेस्टिंग हार्ट रेट माने नॉर्मली जो हम फॉलो करते हैं 10 to 15 मिनट रेस्टिंग करा के, सुपाइन करा के और सिटिंग में करा के, यू कैन मेजर योर हार्ट रेट फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी। सिंस 10 to 5 मिनट उतना सफिशिएंट नहीं होता। अगर आपको अच्छे से किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट लेना है, then what you have to do is you have to take the resting heart rate just before the patient or the subject wakes up from his bed in early morning after having a very peaceful long night's sleep, at least 7 to 8 hours पूरा मॉर्निंग में लीजिए। दैट इज योर रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, तो रेस्टिंग हार्ट रेट जो है माइनस करेंगे तो आपका HRR हो गया। VOR का मतलब ये थोड़ा टेक्निकल है बिकॉज लेबोरेटरी डिपेंडेंट है। देयर इज VO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन कंज्यूम बाय योर बॉडी। R मींस रिजर्व। तो सेम फॉर्मूला, मैक्सिमम ऑक्सीजन माइनस योर रेस्टिंग ऑक्सीजन विल बिकम VOR। तो ये इतना टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं बिकॉज वी डोंट हैव ऑल दैट इंस्ट्रूमेंट इन आवर लैब। So what we can do is we can use this one or we can use percentage of HRR। percentage of HRR use करेंगे तो 30, 40, 60, 90, 90। That's all। याद करने का तरीका 30, 40, 60, 90, 90। 30 से कम very light, 40 से कम light, अगर 30 से ज्यादा है तो light, है ना। In that way you can do it। percentage of VO2 max ये थोड़ा टेक्निकल काम है। VO2 max सब किसी के पास मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। We don't have instrument to measure VO2 max, तो इस दिस इज फॉर ओनली प्लेयर और हाई इलाइट लेवल प्लेयर के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज दैट इज मोर रिलायबल। दिस वन सबसे रिलायबल अगर मुझसे पूछा जाए तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल टेक्निक। सेकंड रिलायबल इज दिस वन VO2 max। ठीक है, तो VO2 max याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। 37, 45, 64, 91, 91। बस 37, 44, 45, 64, 91, 91 ऐसे करके याद कर लीजिए। तीसरा जो एक और आता है मेट। मेट माने, मेट का कंसेप्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट फॉर टैक्स। कोई टास्क करने का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, इसको समझने से पहले एक एजम्पशन है। मेट इज व्हाई मेट इज नॉट रिलायबल, इसका मैं आपको बता देता हूँ। मेट मतलब वन मेट, वन MET। वन MET माने द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय योर बॉडी एट योर रेस्टिंग लेवल। आप सुपाइन या रेस्टिंग लेवल में जब आप रहते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है दैट इज वन मेट। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.5 ml पर केजी पर पर केजी पर 3.5 के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेटली 3.5। देखो हर किसी का 3.5 होता है क्या? नहीं होता ना। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिलायबल। MET इज नॉट रिलायबल। बट स्टिल MET क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट गिव्स ए कंपैरेटिवली फीलिंग। फॉर सपोज 2 MET का मतलब क्या होता है? 2 times द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय योर बॉडी एज व्हेन यू आर हैविंग रेस्ट। यानी रेस्ट में अगर मैं 2 कंज्यूम करूंगा तो 2 times हो गया तो 4 कंज्यूम करूंगा। तो इट गिव्स ए कंपैरेटिव फीलिंग। दैट्स व्हाई MET जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो MET कभी बहुत आसान है। 2, 3, 6, 8.8, 8.8 बस याद करने का। 2, 3, 6, 8.8, 8.8। 2 से कम होगा तो यानी 2 times योर रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन, 3 times your actually resting oxygen consumption। So MET just give you the feeling of the comparativeness। That's why it is more frequently used, although it is not reliable। ये reliable है ही नहीं, but still people use the MET। Another one which is very important in case of diabetes। Suppose आपके पास diabetic आया, diabetic has a diabetic autonomic neuropathy is there। Your diabetic heart rate is not reliable। Sometimes diabetic patient may have ischemic attack and they doesn't know because angina का pain feel नहीं होता डायबिटिक में। और कैसे करोगे उसमें? क्योंकि हार्ट रेट तो रिलायबल नहीं है। ऑटोनोमिक HRV भी आप करेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? इन सो मेनी डायबिटिक हुआ, बहुत हाइपरटेंसिव हुआ, या ऑल दैट कंडीशन वेयर रेस्टिंग हार्ट रेट और आपके हार्ट रेट एक्सरसाइज का जो हार्ट रेट वो अनरिलायबल जब होता है, then you use a subjective measure that is known as RPE। अब what do you mean by RPE? RPE means rate of perceived exertion। इसको rate of perceived exertion मतलब मैं कितना, मेरा कितना वो है subjective feeling to a particular exercise load। Rate of perceived exertion। Okay, तो rate of perceived exertion was first given by a scientist known as Borg। इसलिए Borg scale use करते हैं हम लोग। या
Is it Borg scale, RP, according to Borg? Yeah. There are two type of Borg scale. The first one is the original, which was described by the Borg, and it consists, minimum जो है वो 0 से चालू नहीं होता. It doesn't start from 0. It starts from 6, and it goes up to 20. ये है Borg scale, original Borg scale जो use किया था Borg. Another is the modified Borg scale where 0 to 10, जो हम commonly use करते हैं 0 to 10. ये क्योंकि classic Borg scale is so classic, so many people use it. That's why I have written ये ओरिजिनल Borg scale where 6 से लेकर के 20 तक होता है. मिनिमम इज 6, मैक्सिमम इज 20. यानी आप कैसे फील करते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ योर एक्सरसाइज इज लेस देन 9, देन यू विल ग्रेड द एक्सरसाइज इज वेरी लाइट, है ना. इसको याद करने का बहुत आसान है. 9 तो 9 to 11, 12 to 13, 14 to 17, 17 to 18, दैट्स ऑल. या more than 18 खत्म. तो ऐसे याद करने के हिसाब से मैंने आसान, क्योंकि क्या होता है कि सर, बिकॉज व्हेन यू डू एक्सरसाइज टेस्टिंग, आप मतलब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए. ऐसा है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सरसाइज ग्रेडिंग के हिसाब से हम पेशेंट को या किसी प्लेयर को या किसी इंडिविजुअल को एक्सरसाइज थेरापी देते हैं. इसलिए याद करने के अंदाज से मैंने बहुत आसान से बनाया है. तो Borg स्केल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपसे पूछेंगे तो फॉर एग्जांपल 11, 6 माने कुछ भी नहीं, यानी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसका मुझे कोई फील नहीं हो रहा है. दैट इज 6. 9 से कम है तो वेरी लाइट. अगर कोई 17 बता रहा, 17, then that exercise will be very vigorous too. So in this way, the rating of exertion is the. और ये हो गया एरोबिक के लिए. Another important point is resistant exercise. मैं इसको थोड़ा एम्फेसिस करके थोड़ा स्लाइड दिखा के थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, because this is very important and this is what is lacking in all the medical teaching. क्योंकि हमारी किताब में ये लिखा ही नहीं. हमारे गाइडन, गेनोम या जो भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का बेसिक किताब, उसमें ये सब लिखा ही नहीं. प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी में लिखा ही नहीं, तो लोगों को पता नहीं रहता. तो ये पता नहीं रहते, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कर नहीं पाते हैं. इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा ले रहा हूँ इसको. बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी स्लाइड इज नॉट रिलेवेंट. जस्ट सी दिस स्लाइड, छोटा सा स्लाइड है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज को जानने के लिए, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज इज नॉट ओनली द वे ऑफ एक्सरसाइज, वी हैव टू डू रेजिस्टेंट एक्सरसाइज आल्सो, जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं. तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज का ग्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी लाइट, मॉडरेट, वाइग्रस, नियर मैक्सिमम. कैसे करना है? बहुत सिंपल. इसको याद करने का 30, 50, 70, 85, 85. कैसे? 30 का मतलब क्या होता है कि इसमें RM आपको जानना बहुत जरूरी है. RM का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन मैक्सिमम. व्हाट डू मीन बाय रिपीटेशन मैक्सिमम? नाम में ही सब कुछ है. रिपीटेशन मैक्सिमम, दैट मीन्स you are able to repeat that exercise for a maximum at a particular number. Suppose 1 RM, 1 repetition maximum. That means I am able to do only once. My maximum repetition is only one. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है the weight which you are lifting must be very, very high. It is your limit because you are only able to do only one time. That is known as 1 RM. ठीक है? 2 RM क्या हुआ? You are able to lift 2 times. 3 RM 3 times. 4 RM 4 times. तो ऐसे करके रेजिस्टेंट एक्सरसाइज का ग्रेडिंग करते हैं. जस्ट लाइक you grade your heart aerobic exercise depending upon your heart rate or your to max. So you grade your resistant exercise in this way. So resistant 30% of 1 RM means suppose I am able to lift 100 kg weight only one time by maintaining all my form, correct form होना चाहिए. ठीक है? तो वो 100 kg will be my 1 RM. तो उसका 30% कितना हुआ? 30 kg. तो 30 kg से अगर if I doing exercise resistant exercise by using less than 30 kg, that becomes your very light exercise. If you're doing more than 30 but less than 50, it becomes your light exercise. If you are doing less than 70 but more than 40, that becomes your moderate exercise. If I am doing 85% to or more than 1 RM, that means I am doing my maximum exercise. So in this way grading of resistant exercise can be done. Clear? Okay? तो ये है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज. इसके बाद एक ये जो स्लाइड है इसको थोड़ा सा देखिए. इसको आप देख सकते हैं. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक बेसिक एक और चीज है एक्सरसाइज ग्रेडिंग के साथ. एक्सरसाइज की डिफिनेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी का डिफिनेशन हो गया, एक्सरसाइज ग्रेडिंग हो गया, देन एनर्जी सिस्टम, इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं. दिस इज बेसिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? Because exercise का classification depends upon what kind of fuel you are using. Aerobic means you are using oxygen, predominantly oxygen, and anaerobic means you are predominantly using anaerobic mechanism.
तो अनएरोबिक मैकेनिज्म जो है, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप। ये सब तो हम वी ऑल नो द थियोरेटिकल बेसिस, बट द इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया, या सपोज मेरे पास एक प्लेयर आया, उसने बोला कि आई कम्पीट इन अनएरोबिक इवेंट, सो आई वांट टू ट्रेन द अनएरोबिक। आप कैसे ट्रेनिंग दोगे उसको? हार्ट रेट से। कैसे कैसे हार्ट रेट? ये रफली, दिस इज द रफली आइडिया। तो अगर एटीपी पीसीआर, फॉस्फेजेन सिस्टम कहते हैं, आपको भी पता होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, दैट इज 3 to 6 सेकंड। इफ यू आर डूइंग एन एक्टिविटी, इंटेंस स्प्रिंट एक्टिविटी, देन योर मेजॉरिटी ऑफ योर एनर्जी कम्स फ्रॉम एटीपी पीसीआर सिस्टम, जिसको फॉस्फेजेन सिस्टम भी कहते हैं। मेरे ख्याल से गाइडन में भी लिखा होगा ये, आई गेस सो, फॉस्फेजेन सिस्टम कहते हैं। और फॉस्फेजेन सिस्टम को टारगेट करना है तो आपका एक्सरसाइज जो है 90 to 100% योर हार्ट रेट मैक्सिमम अगर है तो आपके एटीपी पीसीआर सिस्टम को ज्यादा टारगेट कर पाएंगे। फिर आपका एक्सरसाइज जो है थोड़ा लंबे समय के लिए करेंगे, जैसे 1 मिनट से कम, कुछ सेकंड से थोड़ा ज्यादा, मगर 1 मिनट से कम, ठीक है। आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कौन सा सिस्टम आएगा? योर अनएरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, जिसमें आपका ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन हुआ, लिवर ग्लाइकोजन हुआ, वो ब्रेक डाउन करते हैं, अनएरोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर? तो अनएरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है। अनएरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जो है 85 to 100% ऑफ द, सी एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग। ऐसे एक क्लियर कट डिमार्केशन इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू क्लियर कट डिमार्केशन, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे 90 to 100%, 85 to 100%, there is some overlapping. But if you want to restrict your activity only to the oxygen, इसमें भी only नहीं होता, इसमें होता है, because some part of the energy is always providing by anaerobic system also if you are doing aerobic also, ठीक है। 100% किसी में नहीं होता। तो एरोबिक अगर आपको करना है तो 55 to 60 to 90% ऑफ योर हार्ट रेट। देखिए 90% में तो क्या है, अनएरोबिक भी तो आ रहा है ना, तो सम ओवरलैपिंग इज ऑलवेज देयर। बट द गुड थिंग इज यू कैन डू, यू नो, if you know these 3 principles, then you can easily prescribe your exercise by targeting a particular energy system, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको मैं शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूँ। तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझने के बाद हम मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली मेरा जो स्लाइड है किसी और इवेंट के लिए था, जो मैंने बहुत पहले यूज दिस स्लाइड, सो उसमें थोड़ा बेसिक था, दैट्स व्हाई। तो प्रिंसिपल एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का, एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज जान लिया, एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन समझ लिया, है ना, यू ऑलरेडी नो, यू नो व्हाट इज एक्सरसाइज, क्या होता है, एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन जान लिया। अब आते हैं, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन। आप करोगे कैसे? थ्योरी इज डिफरेंट, प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। जो प्रैक्टिकल करता है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना। So what is the scientific way of doing exercise? Because exercise prescription is the basis of exercise medicine. It is a basis of you know, lifestyle medicine. तो उसके लिए आपको याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, फिट वीपी। That's all. फिट वीपी। फिट वीपी हम देते हैं। फिट एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। जो आप एक्सरसाइज देते हैं कितनी बार देंगे? आप 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, हफ्ते में कितनी बार देंगे, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप व्हाट इज द लोड, कितना आप देंगे। इंटेंसिटी तो मैंने बता दिया, एरोबिक एक्सरसाइज का ग्रेडिंग कैसे करोगे, दिस इज बेसिकली द ग्रेडिंग। इंटेंसिटी इज नथिंग बट द ग्रेडिंग ऑफ एक्सरसाइज, एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक बाय यूजिंग ग्रेडिंग ऑफ एक्सरसाइज। वी कैन डू लाइक, यू नो, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, परसेंटेज ऑफ VOR, जो मैंने अभी दिखाया है ना, बाय यूजिंग ऑल दैट थिंग यू कैन डू द इंटेंसिटी ग्रेडिंग। Another is the type of the, कौन सा टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, यू नो, स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो डिपेंड्स अपॉन, यू नो, टाइप ऑफ द एक्सरसाइज। Exercise may be roughly divided into 2 types, that is weight dependent or weight bearing exercise, non-weight bearing exercise. Weight bearing exercise means like jogging, running and all this thing where your skeletal muscle, your weight is being carried by your body. Non-weight bearing exercise क्या होता है? स्विमिंग हुआ, ये साइकिलिंग हुआ। ये सब कब देते हैं? आप बहुत ओबेस हो, फंक्शनल कैपेसिटी वेरी लेस, आपको बहुत और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या सीवियर प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे इस तरीके से देते हैं। अनदर इज द ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हमको देना है एक सेशन में, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, यू हैव टू डिफाइन। एंड वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? फिट वीपी, फिट का तो हो गया यहाँ तक, वीपी, वी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम माने होल ओवरऑल अमाउंट, यानी वॉल्यूम माने वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनटू ड्यूरेशन इज बेसिकली द वॉल्यूम।
है ना, आपने इंटेंसिटी इतना उठाया और इतने समय के लिए उठाया, तो दोनों को मिला के वॉल्यूम बनता है, यानी ओवरऑल आपने कितना किया, दैट इज नोन एज volume. The amount, the overall amount of the exercise, quantity of the exercise in terms of the, intensity, in terms of the frequency, in terms of the duration. तो वॉल्यूम में देखो फ्रीक्वेंसी भी आके कितनी बार कर रहे हैं, अगर मैंने हफ्ते में इफ आई डू 2 times per week, then 2 into intensity, if I do 60% of my maximum heart rate, 6 into 60 हो जाएगा, into if I do 30 minutes in one session, into 30 हो जाएगा. तो frequency, intensity and the time, if you multiply both, then it becomes your volume. कितना, amount, quantity, ठीक है, तो volume होता है. Then exercise prescription करने से आपको एक ही एक्सरसाइज को आप नहीं दे सकते, मोनोटोनस हो जाएगा, इंजुरी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा. इफ यू आर स्ट्रेस ए पर्टिकुलर सिस्टम अगेन एंड अगेन, देन दैट विल बी प्रॉब्लम. एंड ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, ह्यूमन बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए फिजियोलॉजिकल लोडिंग गिवन, एंड दैट लोडिंग शुड चैलेंज योर होम्योस्टेसिस. आप होम्योस्टेसिस चैलेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. इफ यू चैलेंज योर होम्योस्टेसिस, देन द बॉडी विल अडॉप्ट एंड ए न्यू होम्योस्टेसिस, एक नया बन जाएगा. ठीक है, तो वो नया बनना हम चाहते हैं, इसको सुपर कंपेंसेशन कहते हैं, है ना. इफ यू वांट टू योर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, माल एडाप्टेशन हो जाएगा अगर आपने रिकवरी नहीं दिया, बहुत एबनॉर्मल तरीके से दे दिया, तो उसका माल पैथोलॉजी में चला जाए, बीमार हो जाए, इंजुरी हो जाएगा. ऑल दिस थिंग इज नॉट माल एडाप्ट, बट व्हाट वी वांट इज द सुपर कंपेंसेशन और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, सुप्रा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन. उसके लिए यू हैव टू इंक्रीज your all this thing, इसको बोलते हैं progression. You have to increase your exercise. You can increase by increasing the frequency, you can increase by increasing the intensity, or you can change different type of exercise, or you can increase the time duration, ठीक है, or you can increase the volume. तो by using this you should do progression, exercise progress. ज्यादा करेंगे इंजुरी हो जाएगा, कम करेंगे कोई फायदा नहीं. तो आपको एक रिस्क एंड बेनिफिट हमको करना. फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रूल क्या है, तो रूल ऑफ थंब 10 to 20%, 10 to 20% आपको इंक्रीज करना है एक हफ्ते में. मैंने एक हफ्ते एक्सरसाइज कर दिया, अच्छा मैंने सब कुछ कर दिया, तो नेक्स्ट हफ्ते मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उतना फायदा नहीं है. आई हैव टू इंक्रीज माई लोड. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ट्रेनिंग में इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ट्रेनिंग का बहुत सारा प्रिंसिपल है. तो ट्रेनिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द वन प्रिंसिपल है ना. क्या है इसको, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू द इंड्यूस्ड डिमांड. ये एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का काम है, काइनेसियोलॉजी. SAI, specific adaptation to induce demand. Your body will adapt if there is a demand is induced. If डिमांड इंड्यूस करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्रेशन करना पड़ेगा. और प्रोग्रेशन रूल ऑफ थंब क्या है, 10 to 20%. एक हफ्ते में आपने अच्छा सा कर लिया, तो अगली बार से आप थोड़ा सा 10% इंक्रीज कर लीजिए, 20% इंक्रीज कर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इंजुरी हो जाएगी. ठीक है. देन पैटर्न ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट इज पैटर्न. पैटर्न क्या होता है, हाउ यू आर going to do different type of exercise in one session or different session. Suppose I want to do treadmill running as well as weight exercise. तो मैं किसको आगे रखूंगा, वेट पहले करूंगा, ट्रेडमिल पहले करूंगा, एरोबिक पहले करूंगा, ये बाद में, दैट इज नोन एज पैटर्न ऑफ, वो भी आप बताएंगे. सो व्हेन यू डू एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन टू ए पेशेंट और अ प्लेयर और एन इंडिविजुअल, you have to be very scientific, everything has to be quantified, and इसी को ही एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. जस्ट लाइक ए मेडिसिन, जस्ट लाइक ए ड्रग, you have to do each and every individualized way में, आपको साइंटिफिक वे में इस तरीके से करेंगे, तभी जाकर के आपका सक्सेस होगा. नहीं तो कोई मतलब नहीं तो या तो वो सब मैक्सिमल सब एडाप्टेशन हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो उसको इंजुरी हो जाएगी. ठीक है. तो ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सरसाइज प्रिंसिपल FIDL की VP. ठीक है. तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ ये है. ठीक है. एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन ऑल्सो. और पहला जो क्वेश्चन है मैं दोबारा ले लेता हूँ. MET हमने समझ लिया, तो मैं क्या करूंगा, यू हैव टू नो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज टेस्टिंग. जो कार्डियोलॉजी करते हैं, देखिए आइडियली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को करना है, मगर उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको. बेसिक, एक तो आपको यू हैव टू नो बेसिक लाइफस्टाइल, लाइफ एक्यूट. अगर मानो किसी को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया, बिकॉज सी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में, हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, वी आर पुशिंग that particular person to his maximum limit. Exhaustive exercise करा रहे हैं, maximum exercise करा रहे हैं, तभी तो उसका कैपेसिटी नाप रहे हैं. और एक्सरसाइज में क्या होता है,
क्रॉनिक एक्सरसाइज सब मैक्सिमल आपका एडाप्टेशन भी बहुत अच्छा होता है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, बीमारी कम हो जाएगी। मगर there is an acute and transient risk for cardiovascular से हो सकता है, acute muscular system से हो सकता है with acute exercise। ठीक है, हो सकता है किसको कार्डियक इसीमिया हो सकता है, ठीक है, किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज इज फिजियोलॉजिकल लोड, ये एक लोड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट एज वेल एज एडवांस लाइफ सपोर्ट में ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने रिसर्च लिखते हैं एक्सरसाइज के लिए तो इथिकल कमिटी आपको रिजेक्ट कर देती है, क्यों? वो पूछते हैं कि कौन रहेगा, अगर कोई कुछ हो गया तो कौन रहेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी पार्टिसिपेंट है यहाँ से, अभी तो लॉकडाउन है और अभी तो कोविड इशू है, whenever there is possible please do basic life support, cardiac life support आप कर लीजिए, नंबर 1, and number 2 advanced life support if you are able to do then, and number 2 इसके बाद AED should be there, autonomic external defibrillator, very important। वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया, कुछ हो गया तो आप पेशेंट, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, देयर इज सम रिस्क इज ऑलवेज देयर, सो इट कैन कोलैप्स। या तो आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट कर लीजिए, या तो एईडी रख लीजिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट आप ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला स्टेप है, इसेंशियल है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इफ सम इवेंट हैपेंस देन एवरीथिंग आपने जितना भी किया सब चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। दूसरा है, आप जो करते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, वो हम जनरली डिपेंड अपॉन द पेशेंट। पेशेंट अगर फिट है, पहले से एक्टिविटी करते हैं, तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि उसका एक्सरसाइज 8 to 12 मिनट के आसपास खत्म हो जाए। हम ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उसी हिसाब से, इन दैट वे वी कैन सेट द ग्रेडिंग। आप ब्रूस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो ब्रूस प्रोटोकॉल के हिसाब से सेट कर सकते हैं, यू कैन सेट। तो यानी अल्टीमेटली आप प्रोटोकॉल के हिसाब से मत जाइए, आपके रिक्वायरमेंट के साथ यू शुड गो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड यू शुड सेलेक्ट द प्रोटोकॉल, नॉट वन प्रोटोकॉल फिट फॉर ऑल, दिस इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि जो करता है वो टेक्नीशियन करता है, उसको क्या पता। तो इसीलिए आपको यू हैव टू सेलेक्ट, एंड जनरली हम 8 to 12 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि पेशेंट को पहले से एबनॉर्मल है, प्रॉब्लम है, तो हम उससे भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, यानी 8 to 10 मिनट में भी खत्म करते हैं। इस तरीके से हम करते हैं एक्सरसाइज। और दूसरा, व्हेन यू फिनिश कार्डियोरेस्पिरेटरी फिनिश करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं, वी ट्राई आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट, प्रिडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट, दैट इज 220 माइनस एस, आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, या 208 माइनस 0.7 into एस इन ईयर, जो मैंने अभी दिखाया था, इसके कैन यूज दैट फॉर्मूला, दैट इज मोर रिलायबल इन फैक्ट। So if you are using that particular formula, you try to achieve up to approximately 85%, 80 to 85% of your maximum heart rate achieve करना हम चाहते हैं। क्यों? Because अब इसके बियॉन्ड जा सकते हैं कि absolutely you can do it, but risk is there if you are able to, आपके पास कोई कुछ नहीं है, आप एक्सरसाइज करा रहे हो, you are alone, अगर कुछ हो गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो always keep less than 85% of his or her maximum heart rate। ठीक है, तो इसमें एक और चीज है, एक क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस करके एक और आता है। क्रोनोट्रोपिक, ये क्या होता है क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस? वो बहुत सारी बीमारी में, जैसे कि एग्जांपल डायबिटीज का मैंने दिया, डायबिटीज वेयर ऑटोमेटिक न्यूरोपैथी इज हियर, द पर्सन इज नॉट इंक्रीजिंग हिज हार्ट रेट कैपेबिलिटी, इंक्रीजिंग रेटिंग ऑफ, नहीं करता, दैट इज क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट साइन है फॉर मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। फ्यूचर में वो कितने लंबे समय फिर आप रिसर्च में भी, तो क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम 85 से आप रखिए, 85, 80 to 85 के बीच रखिए। ठीक है, ये हो। चलो ठीक है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ईसीजी का कुछ है, अगर ईसीजी का, तो बहुत अच्छा। उसके लिए आपको यू हैव टू नो ईसीजी। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वी टीच ईसीजी टू एमबीबीएस, वी नो द फिजियोलॉजिकल बेसिस, वही तो है। क्लिनिशियन क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द क्लिनिशियन डजंट नो द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईसीजी, दे जस्ट रिमेंबर सम एल्गोरिथम और बस उसी को कर लेते हैं। तो आप तो फिजियोलॉजिकल बेसिस जानते हैं, आप तो उसका कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया हो, यू ऑलरेडी नो दैट। सो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग करके यू कैन बिकम ए मास्टर इन एटलीस्ट एक्सरसाइज ईसीजी। ठीक है, तो एक्सरसाइज ईसीजी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या जानना है? एसटी सेगमेंट,
डिप्रेशन, डिप्रेशन अगर होता है तो मोस्ट ऑफ इसीमिया कहाँ से कैसे नापो, ये पॉइंट आपको, मेरे पास कोई डायग्राम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ईसीजी में देयर इज समथिंग ऑन जे पॉइंट, यू ऑलरेडी नो। ये पॉइंट माने आप क्यू आर एस इंटरवल के जो ऊपर क्यू आर एस से ऊपर आएंगे और जो कनेक्शन है, जो जहां पे पॉइंट है एस के, एस वेब के क्यू आर एस के ऊपर जब आते हैं एस टी सेगमेंट और एस वेब के जो जंक्शन है, दैट इज जे पॉइंट। क्यों जरूरी है जे पॉइंट? 80 मिली सेकेंड आप आगे जाइए, उसके बाद आप नीचे है या ऊपर है, ठीक है। some comparison होना चाहिए ऊपर एंड डाउन एंड अबव हैज टू बी इन रिलेटिव टू समथिंग। रिलेटिव तो क्या, रिलेटिव तो उसके ऊपर यानी क्यूआरएस के पहले वाला, यानी जो आपका जो पी वेब और क्यूआरएस के बीच का जो सेगमेंट है, पीक्यू उससे आप कंपेयर करेंगे। ये पीक्यू यहाँ पे आ गया, क्यूआरएस इधर, पी वेब इधर आ गया, ये पीक्यू आ गया, ये सॉरी पीआर आ गया, पीआर देन क्यूआरएस इंटरवल, यहाँ पे जे पॉइंट आ गया। तो इसके हिसाब से नीचे है या ऊपर है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और नीचे ऊपर से कहाँ से पता चलेगा? 60 to 80 मिलीसेकेंड फ्रॉम द जे पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है, अगर इफ योर डिप्रेशन इज मोर देन, अगर ज्यादा, कितना ज्यादा होना चाहिए? 1 मिलीमीटर, 1 mm सफिशिएंट, इतना आप सतर्क हो जाइए, ठीक है, कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू मे बेटर टू स्टॉप द एक्सरसाइज, है ना, ठीक है। और कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे इट कैन हैपन? मोस्ट ऑफ द टाइम हम चेस्ट लीड में देखते हैं, और एक ही लीड में 3 कार्डियक साइकिल में कंटिन्यूसली आ गया, देन इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। तो आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इन एक लीड है एंड करस्पॉन्डिंग लीड, सपोज आपको भी पता होगा कि लीड, जैसे कि लीड वन हुआ जो लेफ्ट साइड का है, जैसे कि नीचे का देखना है तो क्या है, लीड 2 3, है ना। तो अगर करस्पॉन्डिंग जो एनाटॉमिकल करस्पॉन्डिंग लीड में आ रहा है और एक ही लीड में 3 कार्डियक साइकिल में डिप्रेशन आ रहा है, चेंजेस एक इक्का दुक्का से फर्क नहीं पड़ता, changes, that means some kind of the some ischemia is happening and you should stop the exercise, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। एंड ये जनरली हम डिप्रेशन ही देखते हैं, इलावेशन देखना दिखता है मगर उतना रेयर होता है, बिकॉज एस्ट इलावेशन बेसिकली अगर आपका पूरा मायोकार्डियम जो है पूरा का पूरा अफेक्ट हो, ट्रांसम्यूरल अफेक्ट होता है, देन जाकर के एस्ट इलावेशन दिखते हैं, या इन्फॉक्शन हो, फ्रैंक इन्फॉक्शन हो गया तभी देखते हैं। तो फ्रैंक इन्फॉक्शन अगर हुआ हो पहले तो आपका क्यू वेव तो पहले से दिखेगा रेस्टिंग ईसीजी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल जा रहा हूँ थोड़ा, बट स्टिल आप लोग चाहेंगे तो फ्यूचर में हम केवल ईसीजी पे क्लास रख सकते हैं, जिसमें हम पूरा ईसीजी नॉर्मल से लेकर के पूरा एक्सरसाइज पूरा रगड़ के हम वी कैन डू इट। सो ये हो गया। तो बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो सवाल पूछे थे, नंबर 1 एक ही प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना चाहिए, here a different protocol you choose from, and it should not be protocol driven, it should be subject driven depending upon the subject। तो आपको ये करना है। और फंक्शनल के पास, अगर आपके पास गैस एनालाइजर है तो बहुत अच्छा है, गैस एनालाइजर है तो हमको कैसे पता नौटंकी कर रहा है या एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि द पर्सन इज दे डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज, ठीक है, वो कुछ करके थक गया लाइक दैट ना। हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज लाइंग और नॉट? उसके लिए आरईआर देखते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, VCO2 डिवाइडेड बाय VO2, रेस्पिरेटरी। यू मस्ट बी नोइंग, आपको भी पता होगा कि ये आप लोग एमबीबीएस क्लास भी लेते हैं, you must be knowing what is the importance of, what is the 2-3 point, what is the difference between RQ respiratory quotient and RER respiratory exchange ratio, ठीक है। what is the importance of the RER, ठीक है, ये है। तो RER का इंपॉर्टेंस जो है मैं अभी बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन RQ एंड RER में बता देता हूँ। RQ जो है जनरली हम सेल के लेवल में कहते हैं, सेल के लेवल में। RER जब हम पूरा ह्यूमन बॉडी का जो माउथ से गैस एनालाइजर से व्हेन those we measure, that is known as RER। फॉर्मूला एक ही है, VCO2 divided by VO2, one at the cellular level, one at the पूरा organism level में, where carbon dioxide we basically measure by using a gas analyzer in your mouth, ठीक है। RER and RQ सेम है? नहीं है।
दोनों बराबर हो सकता है, कुछ कंडीशन में नहीं होता है ना। आरईआर, आरक्यू और आरईआर मे नॉट बी सेम, क्लियर। तो डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सब थोड़ा डिटेल में और हम जा सकते हैं, मगर अभी के लिए कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, टेस्टिंग के हिसाब से आरईआर जो है 1 अगर है, इफ द आरईआर इज 1 दैट मींस यू आर बेसिकली यूजिंग योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैन यूज कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन बॉडी कैन यूज फैट, दो चीज है। कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कैन ओनली बी यूज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फैट कैन नॉट बी यूज इन ऑक्सीजन। फैट अगर आपको चर्बी घटाना है तो ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, मस्ट है, बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर ऑक्सीजन दैट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कैन बी बर्न इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग anaerobic where your glycogen is broken down into lactic acid, नहीं तो pyruvate बन जाएगा, pyruvate will go into the your mitochondria and in presence of oxygen then oxidative glycolysis will happen. So if oxygen is not there then you can use carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैं थोड़ा बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट कैन बी यूज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1। नंबर 2, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली, क्या मतलब है प्रैक्टिकली, ये मतलब है कि इफ यू डू ऑल काइंड ऑफ स्प्रिंट एक्टिविटी, जस्ट फास्ट एक्टिविटी, जल्दी जल्दी जिसको करना है, ठीक है, उसमें उसमें क्या यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट यूज होगा। दैट्स व्हाई द प्लेयर्स व्हिच आर इन 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, we generally test the anaerobic metabolism, that is carbohydrate, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट, फैट के लिए हमको धीरे धीरे स्लो रनिंग शुड बी डन। तो आरईआर जो है, अगर आपका एक्सरसाइज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो इसका क्या मतलब है, your cardiovascular system is not able to supply oxygen to your working muscle because cardiovascular system is the limiting factor of exercise, ये आपको पता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लिमिट कब होगा, व्हेन यू यूज ए हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। अब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू योर आरईआर, आरईआर विल, योर बॉडी विल गो इनटू बर्निंग मोर कार्बोहाइड्रेट, व्हाट विल हैपन टू योर आरईआर, आरईआर विल बी मोर देन 1। सो अगर किसी का आरईआर मोर देन 1.1 है, दैट मींस द पर्सन हैज एक्सरसाइज टू इट्स लिमिट। इसीलिए जब कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस हम नापते हैं तो इसमें हार्ट रेट 85% तक पहुंचे, अच्छा है, ठीक है, 85% मिनिमम पहुंचना चाहिए। अगर पहुंचे दैट मींस द पर्सन हैज done his maximum exercise because that is what you want. दूसरा, उसका आरईआर शुड बी मोर देन 1.1 होना चाहिए आरईआर, ठीक है। अब व्हेन यू रीच योर मैक्सिमम देन व्हाट विल हैपन, योर ऑक्सीजन कंजम्पशन, योर ऑक्सीजन कंजम्पशन विल रीच द लिमिट, उसी को तो VO2 max बोलते हैं। is VO2 max? VO2 max is the maximum oxygen consumed by a person in maximum exhaustive exercise. और इसका क्या करेक्ट, मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम मींस you have reached the limit, you cannot go beyond it. That means in spite of increasing your workload, your oxygen consumption cannot increase because it has reached the maximum. तो ये VO2 max का डिफिनेशन है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये सब आइडियलिस्टिक डिफिनेशन है। पुराने जमाने में जब पूरी मेजरमेंट नहीं होता था तब ये सब यूज करता था, बट नाउ प्रैक्टिकली VO2 max को प्लेटू रीच करने वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक यू विल सी एवर। So we use the term VO2 peak, yeah, peak VO2 instead of VO2 max. Peak means the oxygen consumed by your body at your maximum exercise, that is known as peak VO2, ठीक है, instead of using VO2 max. So ये है, तो ये सब जो है ना, जैसे RER more than 1.1, peak VO2, or in spite of increasing workload, the oxygen consumed by your body doesn't increase, okay. And another, उसके बाद क्या है, your heart rate should be at least 85% of your maximum heart. तो ये सब चीज हम चाहते हैं कि 12 मिनट में चाहते हैं, 10 से 12 मिनट में, उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज डिजाइन कीजिए, उसी हिसाब से यू यूज योर प्रोटोकॉल। उसके लिए क्या होगा, इफ यू वांट टू डू रिसर्च देन व्हाट विल हैपन, यू हैव टू कॉल योर सब्जेक्ट बिफोर, थोड़ा करना पड़ेगा, आगे पीछे मॉडिफाई करना पड़ेगा। देन after that you can call your subject and you can measure all the finding। अच्छा, एक और चीज जो सवाल मुझे पूछते हैं, आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू मच थ्योरी और नॉट, क्योंकि सी व्हाट आई हैव डन प्रैक्टिकल वर्क, सो आई कैन go talk and talk and talk, so it would be very nice if someone asks me क्योंकि नहीं तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, I don't know.
Varun, Dr. Varun. Yeah. Please. Uh, I must admit that you are going a little far. Let's continue with the exercise prescription for different age group and different clinical conditions. Absolutely. So मुझे कोई अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज सवाल पूछिए. Question is there in chat box. Okay, chat box. Yes, a question is there. Actually, Varun, Dr. Varun, Yeah, please. yeah, Dr. Kiran Kulkarni. Okay. Yeah. Yes, sir. Please. Yeah, actually, one of the doctors asked, it was a very practical question. He asked Absolutely. us that regarding the exercise testing, that is treadmill testing, TMT testing, what we call Mhm. age related, you know. What? So Age related. yeah, TMT, Bruce protocol. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So from there we actually took off. Mhm. So it would be very nice if you could just tell us regarding the treadmill test that is we do in normal patients, we the cardiologists or we refer them for TMT tests. Mhm. Okay, Yeah. so that was the turning point where we took off and you went to all the internal details of the physiology of what the testing is and your slides and everything. So I Yeah. think TMT testing and Bruce protocol just that would be very practical because we as physiologists or general doctors, when patients are referred and they come with a big ECG TMT test, all those 20-25 pages, then how is it? How just how this happens? We start Okay. at 2 kilometers, then we shift to 4, then and automatically even the inclination of this thing also starts. Absolutely. Can you just See, elaborate on that? Yeah. Just a few. Yeah. Absolutely. See, the issue is I just don't want to tell all the details of how we, because Bruce protocol is relatively easy. It's available in the YouTube. It's available in the Google everywhere. How much we have to increase. So that's why I don't want to talk into how much kitna increase karna chahiye, कैसे करना चाहिए. That is more important because you know how you are going to do. It's already there in the Google. All this कितना के बाद for the 3 minute के बाद how much has to increase. ठीक है, it's already there. It's written. Nothing. It is rigid structure. You have to follow that rigid structure. So instead of talking that, I just want to tell you the practical aspect that if some patient comes, after doing Bruce protocol, ये जैसे आपने बोला report लेके आ गया, अब क्या करोगे? How you are going to go ahead? So Bruce protocol is basically when we use the exercise capacity, as Dr. Kiran has already highlighted. And the most important thing is you want to see, your exercise capacity as well as your body, how much your body is about to, able to do it. Suppose in the Bruce protocol, if what I'm saying is how to do you don't everything. What I am telling you, how you are doing. That's fine. Then doctor doesn't get this field, get this heart rate, like so what you have to do, suppose SM of the instruction heart rate around that's what you as a doctor, by saying what is what you have to do. That's aim to lower heart rate at which
Yes. Hello. Sorry, doctor, we are not able to hear you. Okay. Can you hear me? I Yes. Yeah. Let me check. Yeah, now it's clear. Okay. So I'm saying that in Bruce protocol, if some ischemia event happen, suppose if a patient is having some old, cardiac issue, cardiac problem or something like that, then an ischemia happen, then what you have to see is the point, the intensity of the exercise where that event occurred. And most of the time, that point be at a practical point of view, because everyone can measure the heart rate because wristwatch are available in the market. So, practical point of view, as a doctor, as a medical company, with all this report, what you have to see in the report at what exercise intensity, at what percentage of the heart rate where such incident happen. And you can prescribe your exercise intensity less than, suppose if there is a heart rate, then it should be less than 10, at least 10 to 20 beat less than the heart rate where this happened. This is number one important. Number two important is your because why I am saying in heart rate, because heart rate is very easy to measure, anyone can use. But theoretical point of view, the systolic blood pressure is also important, because the oxygen consumed by the heart is determined by two factors. The first one is the heart rate, and second one is the systolic blood pressure. Systolic blood pressure into heart rate, it is known as rate pressure product or double product. So double product is a parameter which we usually use because we cannot directly measure the oxygen consumption by the heart. So if we know the double product, for example, normal double product at peak exercise for a normal people, it should be 25,000 to more than 25,000, 25 to 40,000. If a particular person is having ischemic attack less than 20, because see 25,000, 40,000, everything comes in your instrument, software is there. Okay, so software is there. So so you have to prescribe exercise less than that. Like suppose if a person is having some problem, there is two options. You can do either do exercise, using your lower leg or your upper arm. What is the difference between lower leg and upper arm exercise? Upper arm exercise raises your blood pressure more as compared to lower leg exercise. Why this is important? Because if your blood pressure, the rising blood pressure, increase in blood pressure is more in case of your upper limb exercise as compared to lower limb, that means your double product will be more. What is double product? Heart rate into systolic blood pressure. If your systolic blood pressure is more, double product. What is double product? Double product is basically the oxygen consumption by your heart. That means precipitation of the angina will be very common if you prescribe upper limb exercise. So practical point of view, number one, you prescribe lower limb exercise most of the time. Number two, and it should be prescribed less than at least 10 to 20 beats per minute of the point where ischemic event happen in Bruce protocol or any kind of protocol which you are using the treatment. Okay, so this is from practical point of view. This is important. Another practical point of view important is your mortality and morbidity from, because after doing Bruce protocol, VO2 max can be estimated by using regression equation. Different equation are here. If you put your maximum speed, your level, okay, so then and height and weight, you can easily calculate your VO2 max. By knowing that VO2 max, you can basically grade that particular person. He is going to the fit, less fit, more fit. And suppose if you are if you are a anesthesiologist, then what is the important surgery, lung surgery, major surgery. If that's VCO2 is less than 10, then you cannot go ahead with any kind of major surgery. We usually doesn't go ahead. So that's why it is this VO2 max and this exercise testing is important not only for common doctor for exercise prescription, but also for cardiologists as a cardiac rehabilitation, because intensity will be decided by your exercise testing. It should be less than the intensity which is causing the problem. Exercise prescription, you have to know the intensity. Another is for anesthesiologists and all that stuff where major surgery and all that stuff, you can, whether you have to go ahead, you can go ahead or not.
So this is also important. So this is the overall practical aspect for exercise testing. But the point is, you have to go ahead with any kind of protocol which require 8 to 12 minutes. And Bruce protocol is one of the time. If some problem is there, or if the patient is a little bit less fit to start with, then you have to do modified Bruce protocol instead of the Bruce protocol, because what is happening is, after 3 minutes, it will just jump on. Hello, I don't know whether my sound is there or not. Sound aa rahi hai kya meri, Gagan? Yeah, we can Hello? hear you. Yeah, we can Don't hear you. Okay. So this is the part, and I will be happy to take more questions. Instead of writing in a chat box, you can just ask me directly, because I don't know where is my chat box. There is a question in chat box. Why don't you just see the chat box Okay, that's fine. I don't know where it is. from Dr. Prenkil? Yeah, there is a question. If you are there, then please. I am going to be 60 this year. Okay, congratulations, sir. I want to be full marathon this year. Okay, my doctor friend are advising me against this. What should I do? I regularly run 10 to 15 kilometer every week now. Okay, 10 to 15 kilometer every week is very nice. You can start, but the issue is marathon. You have to understand, marathon is at least 42 kilometer. It's not a jog. And marathon cannot run just like that at the age of 80. You have to, preparation has to be there, at least 6 month preparation ideally. It can be more than that also. That preparation should be there, because marathon, it's a long endurance exercise, so it will not, the cardiovascular demand will be very, very high. So in order to achieve that, you have to train aerobically, and you are regularly doing 10 to 15 kilometers every week. It's fine, but you should do you have to increase a little bit. Again, if you are dead sure 60, no problem. I am not advising against that. You can do it, but it should be a fine preparation has to be done. And how you are going to prepare? Just by using the progressive overload principle. You have to slowly increase, your training volume, and for that, by every week or every 2 weeks, you can increase, and it has to be, in months. That is, you cannot just increase, and very acutely, and you cannot just go and run, because injury will happen definitely. So my advice is preparation should be done at 6 months. Yeah. Why don't you prescribe like how much intensity he has to increase, like every week how much he has to increase? Okay. So we 10 to see. So if you are 10 to 15 kilometer per week, so I will advise you to increase around the first 10% increment every week. 10% of your 10 kilometer will be how much? You just calculate it and you can increase it. But see, increment has to be in per 1 to 2 weeks, okay? And it should be smoothly. If you suffer any kind of problem, like the most important issue which we face when we increase is the MTSS, that is medial tibial stress syndrome, scene pain, lower leg में scene pain जो होता है, MTSS technical term है. That is what we generally see when we suddenly increase or any kind of stress fracture. So 2 weeks में आप 10% increase कर लिए. Please increase 10%. Okay, slowly, and you should do at least two times. हफ्ते में 2 times 60 minute का strength training आप करिए. Lower leg का strength training बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये दोनों करके आप increase करके धीरे-धीरे you have to increase it, and within 6 months, I think you should be able to take on. Okay, best of luck. Dr. Barun, we have this, they call it as rule of 10. Yeah, Hello? absolutely. Rule of 10. Yeah. Yeah. That is a 10 increase of your load or your intensity volume by 10% every 10 days. Yeah. Every 10 days, you can do every 10 days. You can Yeah. do every 1 week. You can do 15 days also. Depend upon the principle. Yeah. Depending upon the subject. Absolutely. That's right. And So, apart from this, what about the nutrition, food part and hydration part? Okay. Because Absolutely. he's planning for a marathon. Yeah. See. Number one, protein intake has to be increased. Protein is very important. Earlier, what we used to do, see, the most important fuel
was we used to focus earlier. Earlier, the classic example was carb loading and all that stuff. Now the way of approach has changed much. So protein is very important. You have to increase your protein intake. How much you have to increase? It should be at least 1.2 to 1.7 gram per kg body weight per day. Gram per kg body weight per day. Why I am saying 1.2 to 1, you can calculate easily because calculators are available. And if you are non-veg, then you can include fish, or lean muscle, from non-veg. If you are a vegetarian, then pulses and paneer and all that stuff you can increase. But the most important thing, you have to increase your protein intake. Protein intake is very important, especially in case of Indian. We Indian are very lower, in case of protein intake. Number one. Number two, what is important is, in spite of the increasing in protein intake, another important is you should take sufficient carb. I am not saying carb loading, but I am saying sufficient carb has also to be taken. And nowadays, with the coming of the high fat diet and keto diet and all these things, healthy fat is also important. What is healthy fat? Healthy fat are the one which are classified as a omega-3 fatty acid. We have two fatty acids, omega-6 and omega-3 fatty acids. Polyunsaturated fatty acids, these are. So omega-6 are generally the one which are not good for your health. They are basically increase your inflammation. And omega-3 are the one, and omega-3 is basically found in fish, machli, or wild caught fish. So omega-3 is very nice. So you have to increase, that healthy fat is very important. So, and about the hydration, absolutely important. How much hydration is important? Because 70% of your body weight is made of water. That's all. And if you do not take adequate amount of water, in fact, even 2 to 5% decrease in your body weight will affect your performance, and 10% more than 5%, then it will be, you will have problem. Clinically, problem will be there. So hydration is very important. And what type of diet which you have to take is electrolyte as well as carb can also be there. Carb and electrolyte, drink, isotonic drink, if it is there, then it is good. Because one problem is there in case of the long runner is they used to drink lots of, even if their body is not demanding, they used to drink lots of hypotonic solution, like plain water or hypotonic sports drink and all these things. Then what will happen? This will causes hyponatremia. And hyponatremia, if hyponatremia, serious hyponatremia is there, if your sodium level is less than one, sodium level normally around 135 to 145 milliequivalent, per ml, and if it is very less, then what will happen? Then dilutional hyponatremia will happen, and you will end up being in a coma, collapse. So this is known as dilutional hyponatremia. Is very dangerous. Over drinking is absolutely not recommended in case of the marathon or a long running especially. But the drinking has to be there because your performance, your probability of chance of having heat stroke and all that stuff is also affected by dehydration. Dehydration is also there, probability is also there. That's why drinking has to be done. But the drinking should be done adequately. How much adequately? It can be roughly, it can be detected by your trust, level of trust, a little bit more than your trust, because you cannot rely upon your trust. That is ad libitum. It should be a little bit more. Clear? So there are scientific guidelines are there, but I am not going into too much technical. But what I am suggesting is protein intake, increase of protein intake. Rule of thumb, that is 10. You can modify the 10 rule of percentage of 10% increase. You can change that. Protein intake and strength training and proper hydration. And during the marathon, in between, proper hydration, adequately, containing adequate amount of electrolyte and carbs may be there. So and nowadays some keto supplement has also come up, but the results are conflicting. So you may take or may not take. It depends upon you. So I hope it answers the question. So let me check another one. Please ask me question Dr. because I don't know where to go. Yeah, please. Yeah, I'm Dr. Deepa Nair. Okay, yes, ma'am. Please. Yeah, I wanted to ask, can you prescribe exercise for COVID warriors, normal, healthy COVID healthcare workers? Now we have already faced
second wave. Now we are into the third wave, supposedly. Okay. So, what exercise would you prescribe for normal, healthy age between 25, 35 age group? COVID Okay, help okay, those who are like we are going through a stressful condition. So what absolutely, exercise? absolutely. Yeah, so exercise plays a vital role. So Yeah, what yeah, will you prescribe for us? yeah, absolutely. So you have to, what we have to understand is we have to reach a minimum level of exercise should be done by everyone, irrespective of whether we are doing COVID duty or not. So we have to know what is the guideline, what is the recommendation for a minimum exercise. Suppose what I'm saying is number one, in case of the aerobic exercise, what we have to do is number one, at least, what I'm talking is at least minimum. It should be more than that. 150 minutes per week. Per week, एक week में 150 minutes. That means 5 days में 30 minutes per 5 days. 30 minutes per day for 5 days. So 150 minutes of mild to moderate. That's a mild to moderate. See how much mild to moderate? I already show you the intensity of exercise. By using that Yes. grading, you can see mild to. It can be anything. It may be jogging. It can be running. It can be walking. It can be anything. So 150 week of mild to moderate aerobic exercises has to be done. Or if you are able to do more, then you can do 30 to 60 minutes of aerobic exercise mild to moderate per day for maximum days of the week. It should be at least more than 3 to 5 days. Or if you are able to do vigorous exercise that is moderate to vigorous, then it should be around 75 minutes. At least 75 minutes per week. Per week की बात कर रहा हूँ यार, 20 minutes per day. At least इतना तो करना चाहिए है ना. At least this should be done. This is for aerobic exercise. And if you are able to do 75 minutes of moderate exercise, then you can easily you have to do at least 3 times a week, 3 days a week. And what about the strength training? Strength training अगर आपको करना है, if you want to do strength training, if you have to do strength training. There is no option because strength training is very important. It should be at least 2 days per week. And that these 2 days may not be consecutive also. For example, अगर आज मैंने किया, आज कर लिया तो I can give rest tomorrow, no problem. 48 hours rest can be given. But 2 days of resistance training, mild to moderate resistance training can be given. Just remember the mild to moderate 30, 50, 70, 85% of 1 RM. This was what I did describe earlier. So mild to moderate, it can be less than 75% of the 1 RM. तो आप ये करना चाहिए resistance training. And what about the flexibility training? Flexibility also plays an important role, जिसको हम stretching exercise कहते हैं. तो stretching exercise is also very important. कितना करना चाहिए? At least 2 to 3 times a week. और major muscle group of your body, जैसे कि lower limb का hamstring हुआ, quadricep हुआ, bicep हुआ, ये tricep हुआ, या chest का pectoralis major हुआ. तो major muscle group of your body you should focus. Resistance training as well as the what you call the flexibility training. और कितना करना चाहिए? At least 30 minutes, 20 to 30 minutes per day करना चाहिए. और कितना, suppose if you are doing stretching, तो हम stretch करके रखते हैं, कितना रखना चाहिए? 10 to, ज़्यादा नहीं, only 10 to 30 seconds, that's all. 10 to 30 seconds आप रखिए, 1 2 3 4 like this ना, 1 second को 1 count बोल के 10 to 30 seconds you can maintain it and you can release. And you can do 4 to 5 times also, repetition can be done. So these are the important. क्या क्या करना चाहिए? Aerobic exercise कितना करना चाहिए? 30 to 60 per day or 150 minimum, 150 minutes per week. कुछ भी कर सकता है. You can do walking, running and jogging and all these things. Simple exercise, home based exercise can be done. और resistance exercise आप कर सकते हैं by using your body weight. आप plank कर सकते हैं, आप push up कर सकते हैं, आप अपने body weight को इस्तेमाल करके. Resistance training में क्या क्या आता है सर? हाँ जी जी. Yeah. Resistance training का मतलब होता है कि the training which you are doing, your muscle is doing against a resistance. आप जो muscle है वो against a resistance. जैसे कि मैं वजन डंबल उठा रहा हूँ, तो वो आपका resistance exercise हो गया. ठीक है. तो resistance exercise अगर कोविड के टाइम पे अगर करना है तो you can buy a Theraban also. एक Theraban करके आता है, रबर जैसा. रबर को आप करके आप बाइसेप का एक्सरसाइज कर सकते हैं. और ट्राइसेप पीछे अगर मैंने बांध लिया तो मैं ऐसे ऐसे कर लाइक दिस ना,
तो ट्राइसेप का एक्सरसाइज कर सकते हो, लेग का एक्सरसाइज कर सकते हो आप अपने बॉडी वेट पे इस्तेमाल करके, बिकॉज वी आर लिविंग इन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वी आर डूइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अवर बॉडी। तो वो भी जो भी आप बॉडी वेट इस्तेमाल करके, जैसे कि आपने उठक बैठक कर लिया सिंपल, है ना, स्क्वाटिंग कर लिया, स्क्वाटिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो नहीं तो आप सिंपल घर में आप सिंपल आप बना सकते हैं। Varun, lifestyle changes. ओके ओके, मैं एक्चुअली इनको एक बार दिखा देता हूँ, पता नहीं है कि नहीं। ओके, आई एम नॉट एबल टू चेंज माय बैकग्राउंड, आई डोंट नो व्हाई दिस बैकग्राउंड इज कमिंग अप। Varun, या why don't you include lifestyle changes like decrease TV time, like take stairs? है ना? एब्सोल्युटली, हाँ, वो तो शुरू में करना ही करना है। Yeah. देखिए करना, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल चेंजेस। एक्सरसाइज तो बात की बात है, एवरीथिंग कैसे करना है। आप यू हैव टू बी फिजिकल, मोर फिजिकली एक्टिव एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि आपको गाड़ी लेना है तो गाड़ी में मत जाइए, पैदल जाइए। अगर आपको लिफ्ट में जाना है तो यू टेक स्टेयर इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट। और आपको अगर बैठना है तो सहारा मत करिए। इफ यू आर सिटिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम, यू टेक ब्रेक फॉर 5 to 15 minutes, you can roam around here and there, you can come, because sitting is also, देखिए importance is from a theoretical point of view, I am telling you, number one is physical activity। physical activity बहुत जरूरी है, अच्छा है। तो physical inactivity है ना, sedentary, has an independent effect on your mortality and morbidity over and above your physical activity। suppose I am very much physical activity, मैं एक्टिव है, मैं हर हफ्ते करता हूँ, वीकेंड वॉरियर हूँ, मगर मैं बाकी के हफ्ते में मैं बैठा रहता हूँ, आई एम काउच पोटैटो। ठीक है, उसमें भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्टिव काउच पोटैटो फिनोमेना। व्हाट इज एक्टिव काउच पोटैटो फिनोमेना? यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑन द वीकेंड, but you are spending your time as a just sedentary living, that also increase your risks। your exercise cannot आप उसको बचा नहीं सकते। तो because physical activity and inactivity has an independent effect of each other, you have to reduce your physical inactivity, you have to increase your physical activity। sedentary को reduce करना है और physical activity को increase करना है। अगर if you are not doing anything for your sedentary lifestyle but just increasing activity, it will not help in a long time। तो ये important। yeah let me change या प्लीज अगर कोई सवाल है तो पूछिए, कोई टेक्निकल सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी theoretical, practical। Thank you very much for the wonderful hints you have given. I would like to know what is the time for warming up exercise and cooling down exercise after a 10 kilometers run. Okay, very nice। See, we always say rule of thumb। Why we always say rule of thumb? Because there is no standard formula। because by knowing just the rule of thumb principle, you can individualize, because principle, there is one principle individualizing। Every person has different, every person is different, you have to। so what is the rule of thumb? The rule of thumb is always 10 to 20 minutes of warm up, at least 10 to, this is at least 10 to 20 minutes of warm up. How much warm up you have to do? You have to do at least those exercise which will moderately increase your heart rate। it should be moderate, mild to moderate। and mild to moderate, I have already described, mild to moderate is between 57 to 67% of your heart rate maximum। okay, so mild to moderate aerobic exercise which comprise of major muscle of the body, like simple jogging and all this stuff you can do। this is for aerobic, number 1 point, for warm up। okay, number 2 point, you can incorporate certain what you call stretching also, but that stretching has to be has not to not to comprise the component of static stretching। suppose stretching can be done for overall of the body, but the one which you are holding, it should be less than 1 minute, it should be less than 1 minute, then like 10 to 36। why I am saying this is important, many people say, because stretching may not be before doing exercise, if you stretch a particular muscle, then you may not be able to produce power after that, because of the loss in the stretching of the musculoskeletal junction। so
the elasticity problem. That's why static stretching is not recommended before exercise, but general stretching you can do. So the most important is mild to moderate aerobic exercise, compressing the various body for 10 to 20 minutes at least, and some mild to moderate weight training also you can do. And your next exercise bout should be done before your body cools down, because you want to take the benefit of your warm up now. So it should be the next bout of exercise. Ideally, if it is done within 30 minutes or so, then it will be very nice. This is for warm up. What about for warm down or cool down? See, cool down is so much important that we nowadays use the word warm down, not cool down. So much important. Why this is important? Same thing, it has to be done for at least 10 to 20, 10 to 20 or at least 30 you can do minute, after your race or after your run. And it should be done at an intensity which is similar to or less than your warm up. That is mild to moderate. That's all, simple, mild to moderate. And after doing the warm up, your stretching exercise has to be incorporated. Stretching may not be there before exercise. Stretching may not be there. It is not necessary. But stretching should be there after exercise. After exercise, stretching has a very important role. So stretching should be there after exercise, mild to moderate exercise for warm down. And if it is done, mild to moderate, you can just see your watch also to just grade the intensity of exercise. Then it will be very nice and followed by a very nice stretching protocol. So this is your warm down. Varun, what about body massage and ice bath and Okay, sauna? okay. Let me tell you, there are two type of intervention. One is known as passive intervention, another is known as active intervention. Passive intervention is your body. It has a limited value for a particular time, for a particular duration, but it cannot replace the active intervention. Active intervention is your warm down exercise. Passive intervention means like if you ice bath and all that stuff. See, earlier what we used to believe that ice bath and all that stuff was very, very useful, and many people and many elite athlete also does that. But there is one problem, because as research are going on, new information are coming up, and what is more important is some level of inflammation, some level of reactive oxygen species ROS is required for adaptation. Because your muscle has to adapt. Your muscle adapts by using your stimulation of your satellite muscle. Satellite muscle is the what you call the generator of the new repair cell of your muscles. So that is very important. So you have to think about that. So if you take lots of supplement like vitamin C and all that, lots of antioxidants, if you do lots of icing and all that stuff which inhibit your inflammation, then what will happen? Just think, will adaptation be there? No, optimal adaptation will not be there. So if your focus is mainly for weight training, your hypertrophy, suppose I am a bodybuilder and my purpose is to increase the muscle mass, then I will not do ice bath and all that stuff, because science is saying against that. But if you are if you want to improve your subjective feeling, or if you are from certain sports and your second bout is there in the after 3 or 4 hours, and your improvement, your mental improvement, your feeling nice is very important, then you can do ice bath and all, because ice bath improve your subjective feeling. It may not causes any objective changes, physiological changes in your muscle, but it will definitely improve your because mental game is also very important. Placebo effect is absolutely very important in case of players. Players are very superstitious. So this is important, and massage is also important. But the problem is lots of the claim by the massage, it will improve the lymphatic system, it will improve the circulation of the muscle, blood circulation. It will all the claim of the massage doesn't has any kind of the sound scientific backing. There is backing is there absolutely, and but conflicting evidence is there. So from my point of view, from scientific point of view, there is no solid evidence that massage helps. But this is for
molecular basis I'm talking. But for psychological effect, for feel good effect, that is massage is definitely very important. You should go ahead with massage because subjective feeling is also very important. So massage therapy, like running water buoyancy, hydrotherapy, and ice bath and all these things you can take within a And limit. sauna. Sauna also no problem. See, another one which I want to tell you everything is like fat diet and all this weight losing and all this thing. What is the scientific mechanism or scientific limit of losing weight? How much weight you can lose? See, scientifically, approximately 0.5 to 1 kg per week of your body mass you can lose by scientific technique. If you want to lose more weight, then you have to dehydrate. Why? Your muscle glycogen, 1 gram of muscle glycogen approximately store around 2.6 gram of water. 1 gram of glycogen store about 2.6 gram water, and your water is the majority of your body mass. That is 60 to 70% of your body weight is made of water. So if you lose water, then what will happen? You will definitely decrease your weight. So this is the technique wrongly employed by most of the fat diet and most of the commercially all these things dehydrate. The players is dehydrated. You do anything which increase your water, decrease your body water, then that will definitely will causes your weight loss. So this is wrong technique. And sauna also, if you are using too much sauna for the purpose of the weight loss, then you are basically against the science because you are basically achieving your weight loss by using dehydration. That is not a healthy technique. But using sauna, limited sauna, it's important. It has a subjective issue also. Also, it warms your muscle and it can increase your subjective feeling, and sometimes it may improve your performance also. So depending upon how much you are using, that is very, and to whom you are using, that is also important. Yeah. So Sir, I next question. take 2 or 3 bananas before a run, half an hour before a run. Is it advisable or not? Yeah, absolutely. Banana is not a superfood. So, in case of the banana is so important that during the footballer halftime, we used to supply banana to the players. So banana is definitely very important. It has low carb and all the requirement nutrients are there. So definitely it is advisable. And but the thing is, there are certain nutritional guidelines which we have to follow before, that is known as pre-event meal, post-event meal and intra-event meal, like that. This is just technical stuff. So your question is banana accurate? I said yes, you can go ahead, no problem. It's good food. But more extrapolating your question, I just want to touch upon pre-event meal, intra-event meal, and post-event meal. So the scientific basis of the pre-event meal is pre-event meal. Before the event, we usually take low or medium glycemic index food. The food which causes a rise of your glucose very soon is known as high glycemic diet, and the food which causes less is known as low glycemic diet. So we generally follow that, and we generally avoid eating, 45 minutes or so before the exercise. Why this is so? Because sometimes what is happening, not all the people, but sometimes what is happening, if you eat thing, then if you're eating very high glycemic index diet, then your blood sugar will rise patak se, then your insulin will come into the play, and this insulin will decrease your blood glucose. That blood glucose you require during the event, so performance may be affected. So this is for some people. I am not generalizing this concept, but for some people, this is there. This is real. So and some people also having that slight pain in in flank of the abdomen, like your stitch and all that stuff. So solid food also we try to avoid in those the person. So this is basically the pre-event meal, and during the yeah. A pre-event meal, basically the time duration should be, I think, 3 hours before, and basically Absolutely. carbohydrate rich. Yeah, can be them 3 hours, at least 45 minutes. It can be a two. Ideally, what we suggest, suppose a person is having stitch pain while running.
then we don't suggest any kind of the solid food. Solid food is just before 1 hour or 2 hour or 3 hour before the event. So light intake is, Even tell to avoid fat rich and fiber rich food, right? yeah, absolutely. Fat rich and fiber, because fiber will causes bloating and all that stuff, and it will return from the water is also there. So depending upon the person, we advise is I'm just telling the general rule, but general rule has to be changes. Uh, for example, during the intra-event meal or intra-event fluid intake, how you are going to do? If your exercise is less than 1 hour, then you can plainly take plain water, no problem. You can in fact take plain water also. If your exercise is more than 1 hour, then you have to supplement with you cannot go ahead with plain water. You have to supplement with some glucose or some carb, as well as you have to supplement with some electrolyte. Electrolyte is also important. So, and what about the after event meal? After event meal कैसे करोगे? After event meal, see, what is your purpose? Your purpose is replenishment of glycogen. Your glycogen is depleted. Your muscle glycogen is depleted. Your liver glycogen is depleted. So your aim is to replenish glycogen. That's why most of the time, this is general rule. It cannot be applied to everyone, but general rule, we generally prescribe high, good carb diet food, as well as the electrolyte, because your replenishment of your glycogen is very fast within the 2 to 4 hours after exercise. And protein is also important. So protein and carb, not only carb is not good. Protein should be there, like in the form of amino acid you can have liquid form. So what will happen is, rebuilding of the muscle will be there, muscle improvement will be there, as well as your glycogen synthesis will be there. Amount of the carb you are consuming will be less, approximately less, because you are substituting with good quality of the amino acid. This is important. So basically, Varun, and between the, and if you're talking about an endurance event, if you're taking a sports drink, yeah, I absolutely. suggest everyone should see that what is the sodium content, because it is advised that it should contain 10 to 30 millimole per liter of sodium sports Yeah, drink, right? absolutely. It can be done. So these are the some general guideline, and general guidelines should be taken as a general only, and further modification has to be done by the individual person. Okay. So going ahead with the other question and all that stuff. So please ask me if you have any kind of doubt in exercise performance, exercise training and all that stuff. If you have any kind of doubt. I just And wanted to ask one thing. You said about resistance training. Yeah. Yeah, so it includes those squat tests, dumbbells, and weight lifting and all. So any particular group which should not do such kind of resistance exercises? Yeah, absolutely. It depends upon the person. Suppose a diabetic person comes to me. A diabetic person comes to me with a history of progressive retinopathy. Progressive diabetic retinopathy. I cannot suggest him to do high intensity of weight training, because the vitreous hemorrhage may be there. Progressive problem in retinopathy may be there. If a person is having hernia, suppose a person is having hernia, he comes to me for exercise. I cannot prescribe very high intensity strength training. It cannot be prescribed, because you have to consider all those exercise which increase your systolic blood pressure more than 170 millimeter of mercury cannot be prescribed, should not be prescribed, or ideally not be prescribed in case of the retinopathy and all that stuff. And even if I want to prescribe, this doesn't mean that I have to exclude the strength. No, it cannot. Strength training has to be prescribed in mild to moderate. That's all. Mild to moderate, you can prescribe the strength training, and you have to give certain precaution, certain advice to the patient while doing so. What is the advice? Number one, avoid breath holding. Sometimes what will happen is, when we hold breath and we push, what will happen? Your intrathoracic pressure will be very high. So in order to compensate that intrathoracic pressure, high intrathoracic, Valsalva maneuver is also same thing. Breath holding, inspiration and breath holding, Valsalva maneuver, while doing strength training. What will happen?
intrathoracic pressure will be so high that your systolic blood pressure will be very, very high. It will be increased. And because of that, it will affect in your, if some person is having retinopathy, progressive retinopathy, diabetic retinopathy, or hypertensive problem, or some hernia also. So all these things, it will be affected. So in that condition, we generally don't suggest to do strength training. If strength training is done, it should not be done for a longer time. Suppose if a pregnant woman comes to me, then I cannot, in the second trimester or third trimester, I cannot suggest a very high intensity of the strength training. So depending upon a particular person, I have to, have to modify the exercise regime. And What Or is if the right? in diabetes patients, what can be the exercise regime given? yeah, absolutely. Suppose a diabetic person comes to you, depends upon type 1 or type 2 diabetes. Suppose a diabetic person comes to me, then what will happen if he or she was physically active earlier, and if he wants to do a mild to moderate exercise, then I can suggest him to do mild to moderate aerobic exercise, just like what I already told you, that at least 150 minutes per per week, or 30 to 60 per day. Mild to moderate exercise can be done, or resistance exercise at least 2 days, 2 days a week, or mild to moderate, mild to resistant training should be there. But suppose a person who is ekdam sedentary diabetic person comes to you, and if he is a player, or if you want to compete in marathon or some high resistance exercise, then you cannot go ahead. You have to do his cardiorespiratory fitness testing. Then after, ideally for that. So cardiorespiratory fitness testing, after doing that, you have to decide, depending upon the test, how much intensity I have to prescribe to the particular person, so that he may be able to compete here. And also in diabetic, two things are very important: exercise type, as well as your diabetic, what is your glycemic level right now. Because you must be knowing, exercise or physical activity has an independent effect on GLUT4 receptor. Translocation of the GLUT4 receptor causes not insulin and other hypoglycemic drug, independent of their physical activity. That means what? And they are additive. That means chances of the hypoglycemia is very, very high. As well as so you have to be very careful while prescribing exercise to a diabetic. Suppose if a diabetic person comes to you, if his blood sugar is less than 100 milligram per deciliter, then it's always advisable to give some form of a carb to him, so that exercise, post-exercise hypoglycemia can be as long as 12 to 15 hours. In fact, 24 hours also. So your diabetic hypoglycemia can be done after 12 hours also. So in that case, what you have to do is you have to suggest rule of thumb: 20 to 15, 10, or 15 to 30 to 50 gram is what we prescribe to take, especially if he or she is doing rigorous activity and is pre-exercise blood sugar is less than 100. So this is very important. And if a particular person is having blood sugar that is around 200, suppose 200 aa gaya, 250 aa gaya, then what will you cannot prescribe exercise, because there is very dangerous of diabetic ketoacidosis. If it is type 1 diabetes, then diabetic ketoacidosis khatra hai. So what will you do? You have to examine for ketone body in the urine. If the blood sugar is more than 200, around 250. If the ketone body is present, absolutely no exercise. If the blood sugar is more than 300, then ketone body hai, nahi hai, doesn't matter. It's better to avoid exercise. Okay? So exercise should be avoided if the blood sugar is more than 300, it may be more than 350, 450, then it's always better to avoid. And if the blood sugar is 100, then it's always better to add some, glucose, some, high glycemic index food. And what is the rule of thumb? Rule of thumb is, if you are doing exercise for more than 1 hour for a heavy exercise, then it's always better to 20 to 30 gram of carbohydrate before the exercise, as well as after every 30 minutes. This is the rule of thumb.
if someone wants the basic detail, I can show you, because we deal a lot of diabetic patients. For hypertensives, which kind of resistance training exercises can be given? Yeah, for hypertensive, mild to moderate hypertensive, no problem. Okay, let me check whether, I don't know whether it's working or not. Okay, I think it's not working. Okay, wait. Okay, let me show you something, because I think this is interesting. Some of the medicine guy are also here. So for them, this is the blood sugar level, how much carbohydrate you have to give before the exercise, depending upon, this is just a rough guideline. If you want, then it is easily available in Google also. But this all thing are resistant exercise for hypertension. Same way, hypertension also, as I already told you, you have to know what is the baseline hypertension. Suppose a person comes to you with a more than 180 by 190, 180 by 110 or 90, then it's better to avoid exercise. Exercise contraindication is there if your systolic blood pressure is more than 200, like 220 or something like that, or your diastolic blood pressure is more than 115, 100. It's better to avoid exercise in that condition. And it is better to, if your systolic blood pressure is more than 160 or something, more than, then it's always better to control it before doing any kind of exercise. Okay? And during the exercise, if somebody's blood pressure goes more than 250, then 115 diastolic, 250 for systolic blood pressure, then it is an indication to stop the exercise. You cannot go ahead. So this is important. So baseline blood pressure you have to take, and depending upon the baseline blood pressure, you can recommend, and what type of exercise you have to recommend. The most important exercise which you have to recommend for any hypertensive or pre-hypertensive is mild to moderate aerobic exercise. Mild to moderate aerobic exercise. Mild to moderate, I already told you how to grade exercise. So mild to moderate aerobic exercise you have to prescribe. And it may be jogging, and it may be swimming, it may be cycling. Mild to moderate is very nice. It can be done, no problem, but it should be mild to moderate. We generally avoid going to the vigorous part. Then after doing mild to moderate exercise, if your body is able to beautifully adapt to this particular exercise, then we add the resistant exercise. So resistant exercise is added later on, ideally. You can start both also, no problem, but you have to, you have to see the patient frequently then. But if you want to first build up the base, a little strong base of aerobic exercise, then you add the resistance exercise. Resistance exercise, same thing. 8 to 10 exercise consisting the whole major muscle group of your body. 8 to 10 exercise. You can give 30 to or 20 to 30 or 30 to 60 minutes per day of resistance exercise. Simple resistance exercise, mild to moderate intensity. That's all. Or 30 to 40% of 1 RM. You don't have to go too much, because resistant exercise and aerobic exercise are very, very important in case of hypertension. They are known to affect your, decrease your blood pressure as well as cardiac remodeling also. Because cardiac, hypertrophic cardiac myopathy may be there in case of the chronic hypertension. Exercise has an effect on it. Good exercise, good effect is there. So you have to include resistant exercise as well as aerobic exercise, but it should be incorporated very slowly. And as I have already told you, always avoid breath holding, Valsalva, and very high intensity of resistant exercise if you are prescribing to a hypertensive patient. Okay. Varun, Yeah. we have already crossed 2 hours. I think we should stop the session now. Okay, no problem. So if there is any kind of question not left, then we can close the session. And definitely we will do again, continue this session next week if everyone wants, and this group will be there, WhatsApp group, and post your question over there, and we will continue the session next week also. No issue with that. अच्छा, ये बताइए, we'll continue next week also then. Yeah, ये बताइए कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं? Is there any benefit or not? Yeah, It was wonderful, sir. It was wonderful. All our doubts have been cleared.
but now we are getting new insights. So definitely we are going to come with more questions next week. Absolutely, no problem, no problem. Next week, I don't know, I may or may not be there because I have to go to my hometown. Whatever, if some WhatsApp group is there, you can always question in the post in the WhatsApp group, and then I can always comment whenever I will be free, even if we don't have any physical session like this, no problem. So let's see, depending upon the feasibility, we can arrange, or in my place also, Dr. Gagan can speak, or someone from our society can speak. But my point is, we should do implementation. Theory is there, implementation, and lifestyle medicine is very important. Exercise medicine is very important. Let's do it, and it doesn't require any kind of hi-fi machine. Any medical college can do it, and simple. You can contribute to the society. Okay, so this is my idea. Physiologists should contribute to the society. A little bit going to the clinical side, and also all of the clinicians which are present today. Also, I think they might get some benefit out of this. I don't know how many clinicians are there today. Yeah, Dr. Varun, it was quite a beautiful session, Okay, thank you. quite exclusive, and regularly, almost for the last 2 years, we have been like into the webinars and listening to and seeing to the slides and everything. But today was something different, and we happened to learn a lot of things. And hope this session continues. And most of us, I think, will definitely be benefited out of this session, because it was like going into the ground and doing it all by ourselves. So it was, though it was a theoretical session, but it was quite practical, I felt. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you all for joining. Thank you. Thank you, everyone. Okay, okay, bye. Thank Bye you. to all. Bye, good night. Good night.